What's up YouTube and welcome to yet another video from Bangalore, and today we have this product for the unboxing। तो इसके लिए बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, तो अभी फाइनली आ गया है। तो जल्दी से इसको खोलते हैं। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि मैं नॉर्मली चीज़ें अमेज़ॉन से ही परचेज़ करता हूँ। तो एज यूजुअल जल्दी से खोलते हैं इसको। भाई बॉक्स के अंदर बॉक्स, उसके अंदर बॉक्स, उसके अंदर और एक बॉक्स। सो हियर इज द प्रोडक्ट एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। आई डू नॉट नो लाइक इसमें ऐसा तो क्या बोलूँ, मतलब इसका सील खोला गया था शायद एक बार से, इसको फिर से पैक किया गया, पता नहीं। आई डू नॉट नो। लेट्स सी व्हाट्स देयर इनसाइड। अंदर क्या है उसी से मेन पता चलेगा। कैसे है So in the beginning we see a warranty card। तो वारंटी कार्ड में परचेज का सब कुछ दिया हुआ है, नॉट एप्लीकेबल, पता नहीं क्या है। सो दिस इज द थिंग। देन वी हैव अ इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसको भी बाजू में रखते हैं। वी गेट अ मेमोरी कार्ड, एक मेमोरी कार्ड मिलता है। एंड देन सम मोर इन इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स। And here is the product. Here is the main product. By the way, let me tell you, this is the SONY DSC WX 100. So time to reveal the camera, and this is the one. Looks cool, right? This is the product. बॉक्सेस को बाजू में करते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स को भी बाजू में करते हैं। ये एक तरफ पर छोड़ो एंड देन लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। अभी तक तो एक मेमोरी कार्ड, एक कैमरा मिल गया। देन वी हैव द अडाप्टर, देन वी हैव द अडाप्टर केबल। सो दिस अडाप्टर इज 5 volts 0.5 एम्पियर, मतलब 2.5 वॉट्स, 2.5 वॉट्स का आपको वो मिला है। एक मिलता है माइक्रो यूएसबी केबल। तो बेसिकली दिस इज द थिंग। ये आपको इसमें लगाना है एंड दिस वन गोस हियर। Then what else we have? We have a lanyard for the camera। तो इसको भी जल्दी से डाल ही लेते हैं। तो इसके साथ और क्या मिलता है? एंड वी हैव दिस बैटरी। तो बैटरी है 1240 mAh एंड दैट्स इट इन द बॉक्स। बॉक्स को भी रखते हैं साइड में। तो जल्दी से इसको बूट करते हैं। लेट्स द मेन थिंग व्हाई आई परचेज दिस कैमरा इज इट हैज़ अ फ्लिप स्क्रीन। आप देख सकते हैं स्क्रीन जो है इसका प्रॉपरली फ्लिप होता है, तो आप सेल्फी खींचने के लिए आराम से ये कर सकते हैं। तो वी हैव दिस नाइस स्क्रीन। तो टच स्क्रीन नहीं है एक्चुअली में, तो इसको पहले जल्दी से
बैटरी को डालते हैं अंदर, ऐसे जाएगा। Let's see what's there in the memory card. Memory card is of 16 GB 90 MB per second, तो रीडिंग स्पीड अच्छा ही है, काफ़ी अच्छा है। बैटरी कैसे डालते हैं अंदर? ओके, तो बैटरी लग गई है एंड लेट्स बूट इट अप। सो English and our time zone is Kolkata, New Delhi. Daylight saving on, date and time आज है 5th, right? Yeah, so 5 2020 and time 2:16 to 13:40:16. Okay, so the camera अभी boot हो गया, image datable files file okay, तो recovery okay, and yes, so this is the camera. Now you can see like ये कर सकते हैं flip screen and that's what. So this is the basic, क्या बोलूँ मतलब unboxing. So let's come to the main thing, why exactly this camera I have purchased. So the first thing for me is like the zoom. So this is 30x of optical zoom, and that does a pretty good job. Like optical zoom is of 30 times and then another 60 times you get a digital zoom. So that is quite good for me. And the second thing is it's like it's very small. You can see like my palm, the size of my palm and this one, and if you compare it with mobile also, it is quite small, right? Okay, so you can see, you can have a comparison on this, like how big is the camera and how big is the mobile. And also the next point if we come to is like with this point 3-4 inches of screw. So this is the standard size, but then like some of the cameras I have seen like it comes on sides. Now if it comes on when I'll be shooting a video with this, then it will make a little sense, because having it at the like extreme corners and having it in the middle, that makes a little difference. Okay, the next point is the flip screen. Flip screen actually does like a great job, like if you are doing a vlogging thing and if your budget is very less. Okay, you cannot go for like let's say Sony Alpha or something like they have, right, for vlogging for vlogging purpose. And for entry level, this is like this costed me 21,989 rupees. Okay, so that is the thing. Now for entry level vlogger, it's quite good. Like you can have a selfie with this even, and obviously you can shoot videos, okay, and while viewing it. So that gives like that serves the basic purpose. Okay, the next thing is you can charge this camera while shooting. Maybe like let's say if you're taking a time lapse or something like that, you can always charge and keep charging the mobile and shooting a video. You can see on the top here, you can see like it's charging as well as it is clicking or like taking videos or pictures, right? Then let's come to the dial, and here you have the nice DSLR kind of feeling, like you can have all this, right?
so you can keep changing it to your preferred program, and then you can shoot a video. The next point if we come to is like this, it has a NFC badge as well as it has Wi-Fi. So in case if you want to like control the camera with your mobile phone, that is like quite easy, and for that definitely we'll be having a application for this, and we can actually use it for controlling it with via mobile. And also I forgot to mention that you have this thing type in this one, and it pops up the flashlight. So that's it, and while closing it you just press it. So these were the basic highlights of this camera. The detailed video will be there posted a few days later when I'll be familiar with this camera, and then I'll be knowing each and everything of this. So that's it. So that's the basic unboxing of this video. Hope you like it, and the detailed video मैं इसके बाद में दिखाऊंगा आपको, तो उसको कैसे डिटेल मतलब इसका जो पहले कुछ दिन मैं चेक करता हूँ कि सब कुछ पता करते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद then I'll get back to the detailed video on this, and also I'll be having a review for this also. So that's it for this video. Goodbye.